So in last class, we started our discussion about graphs. So remember graphs, and graphs are used many places, many problems in many fields where we model our problem with the help of graphs. So graphs क्या है? It consists of nodes and edges. Nodes are vertices. Vertices हम usually कहते हैं. So different entities, different players in our problem, they are represented by vertices, and among those vertices, we define certain kind of relationship. If the relationship exists between any two nodes, so we draw an edge. So we have to define कि हम किस तरह के relationship देख रहे हैं. So अगर तो relationship exist करता है, so we'll draw it with the help of an edge between two nodes. Agar relationship exists nahi karta, तो there won't be an edge. So usually we represent set of vertices, set of nodes with capital V and set of edges with capital E. So this is a universal notation, G of VE. G is our graph and V and E are our set of vertices and set of edges. So individual vertices or individual edges को हम small letters से represent करते हैं. For example, we have V0, V1, V2, V3, Vn. These are our vertices, and edges are, for example, E0, E1, E2, and so on are our edges small letters में. और जो set of these edges है उसको capital E से represent करेंगे. Set of these vertices will be represented by capital V. Although कोई फर्क नहीं पड़ता you are representing with small or capital, but this is a general notation, universal notation. It is used like everywhere in every book, wherever literature you will see. So keep in mind this notation. We studied different kind of graphs last time. So for example, एक empty graph क्या होगा? On n vertices, we have n vertices and there is zero edge. कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा. जो रिलेशनशिप हमारे इंटरेस्ट का है, जो हम डिफाइन करें, वो रिलेशनशिप किसी भी नोड के दरमियान एग्जिस्ट नहीं कर रहा. सो इट विल बी एन एम्प्टी ग्राफ. और कंप्लीट ग्राफ क्या होगा कि तमाम नोड्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है. सो इफ यू हैव n nodes, so each and every node is connected to each and every other node. So complete graph on n nodes is represented by Kn. Kn means a complete graph on n vertices. So it contains all possible edges. So if we have n is equal to 1, so there's only one node, so there won't be any edge. We are just looking at simple graphs. There are no self loops, no multiple edges, no direction. So it's simple graph. So just simple edges exist kare between nodes. So over here we can see we have K2, a complete graph on two nodes. So दो nodes के दरमियान में एक ही edge होगा. K3, so three nodes के दरमियान कितने edges होंगे? 3 edges होंगे. K4, so we have 6 edges among 4 nodes, and similarly we have K5, K6, and so on. Actually, it's just like we have studied handshaking problem कि जो हमने शुरू में फर्स्ट क्लास में देखा था, सेकंड क्लास में, फर्स्ट वीक में, कि we have n people and each and every person is going to shake hand with each and every other person. So how many handshakes were there? How many handshakes would occur? How many handshakes we will observe? So it was n into n minus 1 divided by 2. So handshake को हम एक edge के साथ represent कर सकते हैं. Handshake means an edge. जो हमारा relationship है, that is about shaking hand. So if each and every person is shaking hand with each and every other person, it means each and every node is connected to each and every other node. So if there are n nodes, so n nodes are connected to, each node is connected to n minus 1 nodes. So n into n minus 1 individual connections है, और जो भी connection है,
involves two nodes, so we have to divide it by 2, क्योंकि हम individual connections या degrees उसको कहें individual degrees काउंट करेंगे तो वो 2 times number of edges हो जाएगा. ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था. So we have to divide it by 2, or in other words we can say it is n choose 2. हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, we have to choose 2 objects, और जो ऑब्जेक्ट्स चूज किए उनके दरमियान हम एक एज ड्रॉ कर लेते हैं. We have n nodes, among n nodes we have to choose 2 nodes, and those 2 nodes जिनको हमने चूज किए there is an edge. तो कितने तरीकों से हम 2 nodes चूज कर सकते हैं? All possible choices, it's n choose 2. So n choose 2 is equal to n into n minus 1 divided by 2. So number of possible edges in a complete graph are n into n minus 1 choose 2. Sorry, n into n minus 1 divided by 2, yeah, n choose 2. We can verify this from these figures as well. So then there is something important, interesting, it's complement of a graph. किसी भी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट क्या है? हमारे पास एक जनरल ग्राफ आर्बिट्रेरी ग्राफ है, उसका कॉम्प्लीमेंट एक हमारे पास जस्ट एक ग्राफ है आर्बिट्रेरी ग्राफ. सो वी हैव n नोड्स, और उन n नोड्स में किसी नोड्स के दरमियान में एजेस हैं जो भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जो एजेस प्रेजेंट हैं उनको छोड़ के जो एजेस प्रेजेंट नहीं है, जहां जहां पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम उसको देखते हैं. So this will give us complement to our graph. जिस तरह एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, can anyone tell me what is complement of a set? अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, हमारे पास एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5. I pick up a set 1 2 3, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? So if I have a set 1 2 3 4 5 and I pick up a set which has elements 1 2 3, let's call it A. So set A का complement set क्या होगा? Anyone? Zaid, Adil, Abu Bakr, Nasir, Noman, Abdullah, Fatima, Dawar, Aklima. तो A minus B हो जाएगा. U minus A, universal set minus A. So that's fine. So अगर universal set मेरे पास 1 2 3 4 5 है and I'm picking up a set 1 2 3, तो complement उसका क्या होगा? 4 5 होगा. ठीक है, universal set minus this set 1 2 3. So मेरे पास 4 5 आएगा. The complement of a graph is exactly similar thing. कि आपके पास जो एजेस प्रेजेंट हैं कंप्लीट ग्राफ में से, एक ग्राफ का यूनिवर्सल ग्राफ क्या होगा? इट वुड बी ए कंप्लीट ग्राफ के तमाम पॉसिबल एजेस. वी आर लुकिंग एट एजेस. सो इफ वी हैव सर्टेन एजेस प्रेजेंट इन ए ग्राफ, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि कंप्लीट ग्राफ में से ये वाले एजेस हटा दें. सो वी विल गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ. फॉर एग्जांपल, we see a graph here on 5 nodes. 5 nodes का complete graph अगर बनाएं तो we will have 5 into 4 divided by 2. 10 edges होते हैं complete graph में, K5. Just like over here it is drawn, K5. So यहाँ पे क्या है? हमारे पास 1 2 3 4 5 6 edges हैं. So इसका complement क्या होगा कि इन 6 edges जो present हैं इनको छोड़ के जो वाले edges present नहीं है उनको draw करते हैं, जैसे राइट साइड वाले ग्राफ में हमने ड्रॉ किए हैं. इसको दोबारा देखें. सो आई हैव हाईलाइटेड दीज एजेस. सो दीज हाईलाइटेड एजेस, आई रिमूव दीज एजेस, और जो एजेस जहां पे प्रेजेंट नहीं है आई ड्रॉ दोज एजेस. तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ. अगर ग्राफ जी और इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ को हम जी बार
के साथ represent करते हैं. So G union G bar, a graph and its complement, दोनों का अगर हम union लें, so we will get complete graph. Similarly, we have more examples here. So this is a graph on 4 nodes, और ये उसका complement graph बना हुआ है. If you take union of this, so you will get a complete graph on 4 nodes. Similarly, over here, I have a cycle, a graph on 5 nodes. Its complement is here. This is a graph on 6 nodes. Its complement is here, and so on. Then I just made complicated examples. You can verify these by yourself. Please, a complement of a graph, एक paper पे you should draw. एक graph है, उसका complement graph किस तरह का होता है. So for an empty graph, what should be its complement? ये हमारे पास एक empty graph है. इसका complement क्या होगा? Anybody can answer? सर कंप्लीट ग्राफ हो. इसका complete graph होगा. Complete graph का complement is empty graph और empty graph का complement is complete graph. कि empty graph में कोई भी edge नहीं है, तो इसका complement क्या होगा कि तमाम edges हैं. जहाँ complete graph तमाम edges present है, तो इसका complement क्या होगा? There is no edge there. That's good. So complement of a graph is something easy, something good. Sometime we come across star graphs. Star graphs is just के आपके पास n nodes हैं, किसी एक node को आपने pick कर लिया, तो बाकी के जो n-1 nodes हैं उसको इस node से connect कर दें. So one graph become a central node and all other graphs become like peripheral nodes. उसके side जो उसके साथ connected हैं central node के साथ. So one is a hub node, central node, and all other nodes are connected to central node. So its shape, I mean, if we draw like this, so its shape is like a star, so we call it star graph. इसमें edges कितने होंगे? So if we have n nodes, एक तो आपका center में बन गया, बाकी के रह गए n-1 nodes. So all these n- nodes are connected to center node. So we have n-1 edges there. So just think of कि star graph का complement graph क्या होगा, काफी मजे की चीज बन जाएगी. So subgraph is just like जिस तरह एक सेट में से आप सबसेट ले लेते हैं, तो ग्राफ का आप कोई कंपोनेंट उठा लें, that will be called subgraph. ग्राफ का कोई भी एक कंपोनेंट, कोई भी एक हिस्सा उठा लें, it will be called subgraph. For example, over here, this is a big graph, और लेफ्ट साइड पे इसका सब ग्राफ बना हुआ है. Actually, this should be, I should make sub graph on the right side. Anyways, so over here you can see this is a complete graph on, it's not complete graph, it's a wheel graph actually on 5 nodes. So iske sub graph you can see, you can have different kind of sub graphs. दो ग्राफ्स यहाँ पे बने हुए, and then we have a K4 complete graph on 4 nodes, and then we can have different subgraphs on it. So subgraph क्या है? आपके पास एक given graph है, उसके subgraph क्या होंगे? उसके कुछ certain portion उस graph को उठा लें, so that would be subgraph of it. And then something important that would be our discussion today, it's paths and cycle. So path क्या है कि आपके पास n nodes हैं, just place them in a row and connect them like a chain. So this will called a path graph. आपके पास n nodes हैं, we place them in a row, and जो consecutive vertices हैं उनको हम उनके दरम्यान एक edge draw कर लेते हैं. So it will become a chain, या इसको हम path कहते हैं. For example, here in the bottom you can see we have 4 nodes. Between any two consecutive nodes we have drawn an edge. We have 3 nodes, so between any consecutive nodes we have drawn an edge. Between 2 nodes we have drawn an edge. A single node has, so there won't be any edge. So if we have n nodes, so we will have n-1 edges. क्योंकि दो consecutive के दरमियान हम एक edge बना रहे हैं, so we will have 1 edge less than number of nodes. n nodes के दरमियान n-1 edges होंगे. So किसी भी path में n-1 edges होते हैं.
जो साइड वाले नोड्स हैं, स्टार्ट नोड एंड एंड नोड, दीज आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स. जो इंपॉर्टेंट चीज है, एंड पॉइंट्स की डिग्री इज 1. दे आर कनेक्टेड टू ओनली वन एज, सो देयर डिग्री इज 1. जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, दे हैव डिग्री 2. सो इन एनी पाथ द एंड नोड्स हैव डिग्री 1 and intermediate nodes have degree 2. Okay. सर Yes. सर ये स्टार्ट और एंड के नोड्स जो होते हैं ये कभी मिलते तो नहीं है ना आपस में? अगर पाथ है तो नहीं मिलेंगे, अगर इनको हम मिला दें तो it will become a cycle. सही. So okay, draw an edge between start node and end node. So this will become a cycle like this. So if we also connect the first and last node, so we complete a circular path. So this is called cycle. So cycle में like जो हम आपको starting point है वहीं पे हम आके finish up कर लेते हैं. So cycle में कितने edges होते हैं? जितने number of nodes हैं. Like path में एक edge missing है, n nodes में n-1 edge है. तो एक node missing है start और end node के दरमियान. वो nth edge अगर हम draw कर लें, it will become a cycle. So for example, this is cycle on 4 nodes, on 5 nodes, on 6 nodes. If we drop any of its edge, so this will become a path. So if we drop any one edge, so it will become a chain, a path. So cycle, so we may draw graphs, same graph in different ways. For example, over here you can see this is a path graph on 6 nodes. और इसी ग्राफ को दोबारा हमने ड्रॉ किया, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके ड्रॉ किया. सो इट डजंट मैटर कि आप ग्राफ ड्रॉ किस तरह करते हैं, एज लॉन्ग एज जो रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स है वो उसी तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं जिस तरह उसको एग्जिस्ट करना चाहिए. तो जहाँ पे हमने नोड्स को लेबल नहीं दिया हुआ, इट जस्ट लाइक पहला और दूसरा नोड तरतीब से पढ़े हैं, तो ये हमने थोड़ा सा तरतीब बिगाड़ दी. पहला जहाँ पे है तो दूसरा जहाँ पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. सो इट डजंट मैटर कि आपके शेप थोड़ी सी ट्विस्ट होगी, एज लॉन्ग एज रिलेशनशिप एग्जिस्ट. सो जस्ट वॉक अलोंग दिस ग्राफ, सो यू विल फाइंड इट जस्ट अ पाथ. ठीक है. Over here it's a cycle on 7 nodes, and over here if we look closely, it's again a cycle, just we have given a twist over here, otherwise it's just a cycle. So we start from here, go to this node, this node, this node, this node, over here, here, and we come back to start point. So this remain the same cycle as this, just उसको draw different तरीके से. So ग्राफ्स में actually it doesn't matter कि आप उसको एक ही ग्राफ को आप डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, as long as the relationships remain same. यानी आप डिफरेंट नोड्स की पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं. नोड्स की पोजीशन आगे पीछे करने से जो एजेस हैं उनकी पोजीशन भी आगे पीछे हो सकती है. सो समटाइम वी कैन एक्सटेंड एन एज, उसकी लेंथ काफी लंबी सी हो जाती है, छोटी सी हो जाती है. सर जी सर एक साइकिल में एक और छोटा सा साइकिल हम बना सकते हैं? नहीं, हम नहीं बनाते. हाँ, जैसे हमने ग्राफ में किया था. कौन से ग्राफ में? सर अभी जो हमने ग्राफ बनाया है उसमें हम हर एक पॉसिबल वे बनाते हैं ना कि एक नोड जो है वो हर एक n-1 नोड के साथ कनेक्ट हो, तो उसकी मैं बात कर रहा था. हर नोड क्योंकि साइकिल नहीं है ना, वो तो कंप्लीट ग्राफ हो गया. हाँ, तो वो साइकिल नहीं है ना, उसमें आप सब ग्राफ देख सकते हैं, सब ग्राफ आपको साइकिल्स मिलेंगे, लेकिन वो इटसेल्फ साइकिल नहीं है. ओवर हियर यू कैन सी ये 7 नोड्स, दिस इज द साइकिल. ठीक है. सो इसमें आप देखेंगे इट्स नॉट ए कंप्लीट ग्राफ, काफी सारे एजेस मिसिंग हैं, बल्कि बहुत ज्यादा एजेस मिसिंग हैं.
21 एजेस होने चाहिए, तो जहाँ पे 7 एजेस 14 एजेस मिसिंग है। अगर आप किसी कंप्लीट ग्राफ का सब ग्राफ देखेंगे तो ओवर देयर यू विल फाइंड मेनी साइकिल्स। इट डिपेंड्स, वो अभी हम बाद में करेंगे, लेबल्ड ग्राफ और अनलेबल्ड ग्राफ। लेबल ग्राफ होगा तो एक ही साइकिल होगा, अनलेबल्ड होंगे तो काफी सारे साइकिल बनेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। सो अभी जो आपके सामने ग्राफ है, सो उसको हमें देखना साइकिल है कि नहीं। ठीक है। ओके सर। सो कनेक्टेड ग्राफ, नाम से जाहिर है कनेक्टेड ग्राफ मींस ए ग्राफ विच इज कनेक्टेड विच इज नॉट डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड में क्या होगा कि उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स बन जाएंगे जो आपस में कनेक्ट नहीं हुए। सो वी कैन नॉट कनेक्ट नहीं हुए मींस उनके दरमियान कोई एज नहीं है। So we cannot go from one component to another component because there is no edge. हम एक पाथ नहीं बना सकते, एक यानी कुछ कनेक्टेड कंपोनेंट को हम इस तरह ज्यादा अच्छी डेफिनेशन कर सकते हैं कि इफ वी टेक एनी नोड, हमारे पास n नोड्स हैं, इफ वी टेक एनी नोड we can reach any other node. So we can define a path from a node A to any other node B. So there exists a path. We can reach from one node to any other node. अगर वो disconnect हो जाएंगे तो we cannot reach to certain nodes. For example, so over here I have highlighted, like if I start from this node and I want to go till this node, so I can like traverse a path and I can reach the end node. And I can actually, in this graph, I can find many paths and I can reach to this node. So there exists some path कि मैं एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंच सकता हूँ, and you can find any node, you can find a path between any two nodes. So this is connected. इसमें ये वाला एज, लेट मी हाईलाइट दिस, ये वाला एज, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज। अगर इस एज को मैं हटा दूं जो हाईलाइट हुआ है, तो ये नीचे वाला कंपोनेंट और ऊपर वाला कंपोनेंट दे विल बिकम डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना। सो दिस काइंड ऑफ एज इज कॉल्ड ए ब्रिज, दिस काइंड ऑफ एज इज कॉल्ड ए ब्रिज। इफ यू रिमूव ए ब्रिज, if you remove an edge which is a bridge, so the graph becomes disconnected. वो एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। So if we remove the bridge, it becomes disconnected, just like bridge in real life bridge. If we remove the bridge, so people on one side of the, for example, river cannot go to the other side of the river, so the people become disconnected. So similarly for graph, if we remove this edge, this bridge, the graph becomes disconnected. So bridges are very important actually. I mean, these define connectivity of the graph. If we remove the bridge, graph become disconnected. So and इसके अलावा भी, I mean, we can study many property of bridge के ब्रिज के एक साइड पे जो नोड्स हैं, जितने भी नोड्स हैं, if they want to go to the other side nodes, they have to pass through the bridge. So bridge becomes like a bottleneck. And if we have okay, connectivity को हम फिर बाद में डिफाइन करेंगे, अभी सब सिर्फ ब्रिज को हम देखते हैं। So over here on 5 nodes, I have drawn a number of connected components. So these are all connected components. These are all possible connected components on 5 nodes. So you can verify these, draw these, you can see. So we define walk. Walk क्या है? A walk on a graph is G. Yes. सर जब हम एक साइकिल बनाते हैं उसमें कोई एक नोड अगर मिस हो जाए तो वो ठीक है? नहीं, साइकिल में नोड मिस मींस आपके पास n नोड्स हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव 5 नोड्स, ओके, देन
सर उसमें से एक मिस हो जाए और बाकी हम अपना साइकिल बना दें एक को छोड़ के, यानी n चार माइनस n नोड यूज कर। चार चार नोड्स पे आपने साइकिल बना दिया, एक को छोड़ दिया। अगर यस आपके पास 5 नोड्स हैं, so it means it is a disconnected graph in which there is an isolated vertex and a cycle. उस पूरे ग्राफ को हम साइकिल तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर एक साइकिल है, इस ग्राफ का एक सब ग्राफ है which is a cycle, isn't it? ठीक हो गया सर। सर जिस तरह ठीक है ना? आपने पाथ का बताया, हाँ, आपके अंदर एक पाथ था, ये जो so अभी हमने डिस्कस किया। अब यही देखिए, साइकिल के अंदर काफी सारे पाथ्स हो सकते हैं जो सब ग्राफ है साइकिल के साथ। सो वी कैन हैव this is a cycle. If I remove any of its edge, so this will become a path. So it means इसका एक सब ग्राफ है which is साइकिल के एक सब ग्राफ है which is a path. तो अगर ग्राफ के अंदर, गिवन ग्राफ के अंदर हम सब ग्राफ्स की बात करें, so then we can see कि there are cycles and we often do this. We often do this thing कि हम सब ग्राफ्स, एक गिवन ग्राफ के अंदर हम सब ग्राफ देख रहे थे। जस्ट लाइक आपके पास बड़ा सा नेटवर्क है, network of, for example, people of Lahore, who is infecting whom for like this epidemic, corona epidemic. So इसका हम एक ग्राफ बना सकते हैं, काफी बड़ा सा ह्यूज ग्राफ होगा. So we can find कि is there a complete graph? Complete graph क्या होगा कि वो तमाम लोग एक दूसरे से मिलते रहे and they affected each other. So they could be like Lahore ki population, hum suppose 10 million. So can we find a group of like 8 people and they are living in the same family, for example, in the same home. They are meeting each other. Each and every person is meeting each other. Each and every person is affecting each other. So they make a small complete subgraph within a big, huge graph. और इस तरह के हमारे पास काफी सारे कंप्लीट ग्राफ बन सकते हैं, या देयर कुड बी सम साइकिल्स कि एक दूसरे से मिला, दूसरे तीसरे से मिला, तीसरे चौथे से मिला और चौथा वापस पहले से मिल गया. So there is a cycle of 4 people. So can we find cycles of like 4 people, cycle of 5 people, and so on. So in a big huge graph we are often looking for some small subgraphs. So these are very practical problems. We often do these things. ठीक हो गया? So we were discussing walk. Walk क्या होती है? Walk is just like आपके पास एक ग्राफ है G and you walk along graph. ग्राफ के आप किसी एक नोड से स्टार्ट होते हैं and you start traversing the graph in any direction to any nodes. जो आपके पास available edges हैं उस पे आप चलना शुरू कर देते हैं. It will be walk. So walk और path में क्या फर्क है? Path is के you are going through each edge only one time. So all edges are in a sequence. Walk में walk is के you may go to certain nodes, certain edges multiple times. It's just like अगर आप अपने घर से निकलते हैं, you go to market and you go to masjid. So there is a path which goes from your home to market and to masjid. Walk क्या होगी कि okay, you go from your home, you go to market, you go to masjid, and then you go back to market, then you go to masjid, and then you come back to home, and then you go to market, and then come back to home. So this defines your walk, your activity, कि आपने किस तरह की walk की है. So in walk, you may traverse a number of nodes, a number of edges multiple times. जबकि path में क्या होता है? You do not repeat. So walk is just like a path, but you may repeat many edges, many vertices. For example, over here, if I start from node 1, so I may go to node 2. So यहाँ पे available edges draw किए हुए, and green edges are those जिन पे मैं walk कर रहा हूँ. So जिस edge पे मैं walk कर रहा हूँ, जिस node पे मैं walk कर रहा हूँ, they become green. So I go to from 1 to 2, 2 to 4, and then I come back to 2, and then I come back to 1,
go to 3, go to 5, and then go to 6. So this is my walk, my activity over the graph. Similarly, I can have another walk. For example, from 1, I go to 3. From 3, I go to 2. And then I come back to 3. Then I'm going to 5. And then I'm going to 6. And then coming back to 3. And then maybe I come back to 1. Okay. So obviously, this is not a path. And there are many cycles, some other leaf nodes, edges. So a walk is just my activity along certain subgraph inside a graph. For example, one more walk. So from 1, I come to 3. From 1, I don't know, we can define it in multiple ways. From 1, I can go to 2, 2 to 4, 4 to 3. Then I go to node 5, node 6, come back to 3, and come back to 1. So this is one particular walk. Okay, so we discuss one important walk. This is called Eulerian walk, या Eulerian path भी इसको कहते हैं. So हमने अपनी walk पे कुछ restriction लगा दी. So we define a walk in a graph G such that each edge is visited only once. आप किसी भी edge को सिर्फ एक बार visit कर सकते हैं. We have to visit each and every edge, but only one time. So इससे पहले जो walk की definition की उसमें क्या था? We may go to any edge and any number of times, and we may skip some edges as well in the graph. It is just my activity. What kind of activity I am going to have over the graph? Eulerian walk क्या है कि in a graph I have to visit each and every edge, but only once. I cannot repeat it. किसी नोड को तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन किसी एज को मैं रिपीट नहीं कर सकता. So Eulerian walk, Eulerian path, it was proposed by Leonhard Euler. कुछ लोग इसको Euler पढ़ते हैं. It's not Euler, it's Euler. So Euler was Swiss mathematician of 18th century. So Euler का नाम आपने कहीं और भी सुना होगा. किसी ने सुना है Euler? सर आइलर फॉर्मूला सुना हुआ. हाँ, वो क्या था? जबरदस्त छा गया. Euler फार्मूला या Euler आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं. E raised to iota theta is equal to sin theta plus iota cos theta. यही था ना Euler's identity. इसको we can then इसी की हम manipulation करके we can write down like cos theta is equal to e raised to iota theta plus e raised to minus iota theta over 2. उस तरह भी लिखते हैं. एक और जो हमने आपकी क्लास एक्टिविटी 1 में भी किया था, Euler's number. E is Euler's number. So base of natural logarithm. E is equal to 2.7128. So that is Euler's number. So it was Euler who proposed this theorem, this concept of Euler walk. So Euler walk क्या है? So Euler walk says that over an edge we may have we may start from any node. We may start from any node, and we have to go to each and every edge, but only one time. We cannot go more than one time. And at the end, we should either come back to starting point, or we may not come back to starting point. Actually, the origin of this is it's from like one German city, Königsberg. Königsberg का भी current name is Kaliningrad. So Königsberg में Euler proposed this thing that in the city of Königsberg we have 7 bridges. The river that passes through the city, it divides
the city into 4 parts. So over here in the map you can see there is an upper part, एक lower part है, एक island से बन जाता है और right side पे it's like a delta of river, उसके अंदर एक part है. So we have Sir? 4 parts. Yes. जी. सर ये तो वही प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो सकती. हाँ, ये किसने बताया आपको? सर मैंने की हुई है. तो आपने सॉल्व की हुई है? जी सर. सॉल्व कैसे की? ये सॉल्व नहीं हो सकती तो? सर ये एक ना सर ने एक दिन हमें मजाक में बताया था डेटाबेस में जब पढ़ रहे थे. कौन से सर तो ने? सर अवैस ने. अच्छा, ठीक है. ओके. हाँ सर कहते हैं अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो आपको डायरेक्ट ए दे दूंगा. तो आपने फिर सॉल्व कर दी. हाँ. Okay. Okay, that's interesting. Okay, and that's good that someone discussed this thing. So this is a very classic problem, no? And actually this is one of the fundamental result of graph theory. Or of course database में, I mean algorithms में we can define, we use graphs and trees so many times, we have to use it. So anyways, the problem is कि हमारे पास शहर के 4 हिस्से हैं, दरमियान में से रिवर गुजर रहा है, इसकी शेप जिस तरह की वो नजर आ रही है. So we have 7 bridges that connects different parts of the city. ठीक है, ऊपर आपको 2 bridges नजर आ रहे हैं, नीचे 2 bridges नजर आ रहे हैं, and there are 3 bridges on this side. So total 7 bridges we have. So the question is, if we start from any point, from any of this area, let's call them A, B, C, D, we start from any one of these area. Can we go through each and every bridge, but only once? We cannot cross any bridge twice, and we have to go through every bridge at least exactly once. Okay, इसको हम जरा redraw कर लेते हैं. So ये रियल मैप था, तो इसका हमने एक कार्टूनिश मैप सा बनाया, एंड देन वी मेक ए ग्राफ ऑफ इट. जो इसमें लैंड एरियाज हैं उनको हम नोड्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी, और जो ब्रिजेस हैं उनको हम एजेस के साथ रिप्रेजेंट करें. सो वी हैव 4 नोड्स, 4 लैंड एरियाज, एंड वी हैव 7 एजेस. 7 एजेस रिप्रेजेंट आवर ब्रिजेस. तो ये एग्जैक्टली जो ये मैप नजर आ रहा है सिटी का, इसी को हमने ग्राफ की शक्ल में दे दी. इसको जरा और बेहतर तरीके से हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. वी लेबल इट ए बी सी डी. सो इसी को मैंने रीड्रॉ कर दिया है ग्राफ को, एंड देन वी हैव दीज एजेस. सो नाउ द क्वेश्चन इज, instead of bridges we will use the terms edges. So if we start from any node, can I go through each and every edge only once? I may come back to my starting point, or I may not come back to my starting point. So this, if I can do this thing, so this will be called Eulerian path, या Eulerian trail, या Eulerian walk, or the graph itself should be called then Eulerian graph. So before we solve this problem, और नसीर ने हमें पहले ही बता दिया कि ये solve नहीं होता, so we'll see कि ये solve क्यों नहीं होता. सर इसका बस एक वे था कि अगर ये ना इवन नंबर हो ना सर, हमारे जो ब्रिजेस हैं, तो जी. तभी हम पास थ्रू कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग पोजीशन पे बैक भी आ सकते हैं. और यहाँ पर हर एक का ओड है, जस्ट एक को जोड़ के, तो वो जिस भी हम एरिया में जाते हैं वो वहीं स्टक हो जाता है. जी, एग्जैक्टली लाइक दिस. उसमें ये देखें, हमने अभी लास्ट क्लास में डिग्रीज को पढ़ा था. So we have to see कि each and every node should have even degree, only then it is solvable. वो अभी हम थोड़ी देर में करते हैं, ये शायद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कितना टाइम रहेगा. So let's look at this thing. इसको हम let's try to solve it. बल्कि I will appreciate कि if you can do it on your papers, yeah, on your screen, if you can do this thing. If I start from this point, can I go through each and every edge and
Can I traverse like this so we can see? मुश्किल लग रहा है. So you people can try. Can you go through each and every edge only one time in this graph? I hope आप लोग try कर रहे हैं. Okay. So कुछ edges skip हो जाते हैं. So it shows कि नहीं, this is Eulerian graph, so it means this can be done. So I can, yes, I can do, yeah, like this, and I come back to my starting point. So ये हो जाता है. So if you follow the mouse with me, मैं mouse की movement करता हूँ. If you can follow the mouse movement, so you will see. I'm going here, coming down, going here, going by this point, coming here, like this, coming here, over here, and then I come back to my starting point. So I traverse each and every edge only one time. I can go to the nodes multiple times, but I cannot go to any edge more than once. So this is Eulerian. And this second graph is called semi-Eulerian. So Eulerian or semi-Eulerian में क्या फर्क है? Eulerian graph in which you come back to your starting point. Semi-Eulerian, we can still traverse each and every edge only one time, but we cannot come back to our starting point. So for example, if I start from here, I can go like this. नहीं, कुछ गलत हो गया. So if I start from here, coming down, this side is traverse, coming here, I come here, here. Yeah, so I started from upper point, so I cannot go to the upper point anymore. So I cannot end up to my starting point. So that's why it's called semi-Eulerian graph. और ये जो right side पे graph नजर आ रहा है, in this we cannot traverse each and every edge. So you can try it कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. ठीक है? So we have Eulerian graph such that if we start from certain point, we traverse, we go through each and every edge only once, and we come back to our starting point. So it's Eulerian graph. If we cannot come back to our starting point, then it's semi-Eulerian graph. And if we cannot traverse each and every edge, so then it is non-Eulerian graph. Okay. So ये तो हमने ढूंढ लिया. So we make a rule. If in a graph G, every vertex has a degree at least 2, then graph contains a cycle. अगर किसी पॉइंट पे किसी नोड की डिग्री 1 हो, तो हम उस नोड तक तो पहुंच सकते हैं, उसे वापस नहीं आ सकते, because we do not have to traverse it 2 times किसी भी एज को. सो फॉर एग्जांपल जहाँ पे अगर इसके ऊपर एक नोड है और यहाँ से एक नोड एज आ रहा है, सो ऊपर वाले नोड की डिग्री 1 हो जाएगी. सो इफ सम नोड हैज डिग्री 1, so we cannot define and then maybe we can go to that node but we cannot come back from that node क्योंकि वो वाला एज एक ही बार ट्रेवर्स होगा. So if every vertex has a degree more than 1, it has at least 2 है, 2 से ज्यादा है, then this G contain a cycle, then we can define some cycle. इसका कोई सब ग्राफ हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, which is cycle. So we make a theorem. It's theorem by Euler. So a connected graph G is Eulerian if and only if the degree of each vertex is even. जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि नंबर ऑफ ब्रिजेस किसी भी नोड से कनेक्टेड जो है वो इवन होने चाहिए, ऑड नहीं होने चाहिए. ऑड होंगे तो वी विल गेट स्टक टू certain node, certain area. So bridges को we instead of bridges we call now edges, and degree
So कितने edges उस पे आते हैं? It's degree of the node. So a connected graph G is Eulerian if and only if the degree of each vertex is even. हर एक vertex की degree even होनी चाहिए. So over here we can see पहले node की degree is 2, second node has degree 4, 4, 4, 4, degree is 4, and last node has degree 2. So we every node has at least degree 2, so we have a cycle, and every node has even degree, so we should have an Eulerian cycle, Eulerian graph in it. So semi-Eulerian कब होगा? If and only if it has exactly two vertices of odd degree. Okay. Yeah. So a semi-Eulerian, if we have two vertices with odd degree, so these will be those two vertices. जो एक हमारा starting vertex होगा और एक हमारा ending vertex होगा, and we will not be able to come back to our starting point. So it will be semi-Eulerian. So important question is how to construct an Eulerian path. If we know a certain graph is Eulerian graph, हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है, so we say it is Eulerian graph. How to construct an Eulerian path over it? So we have Fleury's algorithm. हम ये algorithm अभी स्टडी करेंगे और then we will stop the class. So we have just simple two rules. We start in any vertex. Okay, we pick up any vertex and we start from it. Let's call it U. And we traverse any edge जो भी इसके साथ connected है. For example, if I'm starting from this vertex, I can start in any direction. अब जो vertex जो edge मैं traverse करता जा रहा हूँ वो वाला edge में उसको you can say कि आप highlight कर लें. ये cover हो गया इस पे, अब हमें दोबारा नहीं आना. In other words, I keep record of it and I erase this edge. ताकि मुझे confusion ना हो दोबारा से. So whichever edge I am traversing उसको आप erase कर दें. And then move to any of next edge. Just be careful. Don't go to any bridge. Bridge की तरफ आपने तभी जाना है when you have traversed all other edges. क्योंकि एक बार आपने bridge cross कर दिया, so you cannot come back to it. So erase the edges as they are traversed. And if you find any isolated vertex, so just erase that as well. So at each stage, use a bridge only if there is no alternative. जब आपने बाकी तमाम sides traverse कर ली, only then go to the bridge. ठीक है? So in this way you can form a Eulerian graph, Eulerian path. So you can try with these graphs जो आपके पास नीचे दिए हुए using Fleury's algorithm. Can you make a Eulerian trail? If I start from here, I go to here, so I erase this edge. Then I come to here, I erase this thing. Now this is a bridge, so I should not go to here. So I go here, so I erase this bridge, I go here, I erase this bridge. So when I go this side, so now this is bridge, but there is no other option. So I go this and this way and I erase this one. Then I come to, yeah, this way, this way, this way, and then come down over here, this way and this way. So try to do it on paper. जब तक paper पे नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा. So in Königsberg problem, 7 bridges problem, it is not solvable. This because this is not an Eulerian graph. We have over here we can see the D has degree 3, C has degree 3, B has degree 3, and A has degree 5. So all of these vertices have odd degree.
जबकि Eulerian ग्राफ की कंडीशन क्या है? Each and every vertex should have even degree. So that's why this problem is not solvable. Konigsberg problem is not solvable. And next, there are some exercises you can do. You have to draw some Eulerian paths on it and so on. And in next class, we will discuss Hamiltonian cycle. Hamiltonian cycle, just a brief definition. It's just like Eulerian graph, Eulerian path. Eulerian path में क्या है कि we go through each and every edge one time. हम किसी भी vertex पे बार बार जा सकते हैं, लेकिन हर एक edge पे हम सिर्फ एक बार ही जाते हैं. We have to cover each and every edge such that no edge is repeated. So exactly once we have to go to every edge. Hamiltonian cycle क्या है? Hamiltonian cycle is we have to go to each and every node only once. Exactly once, in fact. We have to go to each and every node exactly once. We cannot repeat the nodes. So that will be Hamiltonian cycle. So Hamiltonian cycle, we start from a certain node and we reach back to initial node. So it becomes a Hamiltonian cycle. If we cannot reach back to starting point, so it will be a Hamiltonian path. We will discuss it next time.